All right, guys. So now, जो next वाली working अब आज करनी है ना, um, that comes under the heading of quantum physics. Now, within quantum physics, there are three subsections. So, the name of the topic essentially is quantum physics. That is how they have defined the term in your syllabus. And within quantum physics, we have the first subtopic. ये आज start कर रहे हैं, photoelectric effect, followed by the second subtopic, referred to as the spectral lines, and then the third one, known as the band theory. So I'll start with the first one, which is photoelectric effect. Now, before I start with this, कुछ prerequisite terms हैं. तो पहले मैं चाह रहा हूँ जरा वो वाले terms read through कर दूं, उनकी definitions वगैरह बता दूं, and then I'll start with the essential working involving the idea of photoelectric effect. Okay, अली शायद वो deactivate हो गया होगा. Let me just check. अब आ रहा होगा अली. All right, guys. So starting with the working, the first thing is how do we define the term? And that term is electron volt. Denoted by the symbol of EV. So we define electron volt as an alternate unit of energy. So just like joules is 1 unit for energy, similarly, electron volt EV is an alternate unit that can be used for energy. How do we define it? So it is defined as the amount of kinetic energy which is gained by an electron if it accelerates from rest through a potential difference of 1 volt. So basically, think of an electron which starts from rest. If this electron were to accelerate through a potential difference of 1 volt, then whatever kinetic energy this electron is going to acquire, we refer to that kinetic energy by the term 1 electron volt. Okay, so think of an electron which begins from rest. When this electron accelerates through a potential difference of 1 volt, the amount of kinetic energy it gains, that amount is referred to as 1 electron volt, or in short, 1 EV. So the question does arise, how much kinetic energy is the electron actually going to gain? So to work that out, if you start with the basic O levels wala formula, remember in O levels, we used to define voltage as work done. I can replace work done by the term kinetic energy upon charge. So potential difference, voltage, that's 1 volt. Kinetic energy is what we are trying to find out. Charge refers to the charge of the electron. If I cross multiply the value which I'm writing with the red marker, this amount, which is actually the charge of the electron. So this amount of energy, 1.6 times 10 to the power of minus 19 joules of energy, this value of energy is given a special name, and this value is referred to as 1 electron volt. Now, in exams, this conversion is not given to you. So for exams, it is expected कि आपको ये value याद होनी चाहिए. और hopefully आपको अभी ही याद हो जाएगी, because the value is similar to the charge of an electron. So you can't really go wrong with that. Okay, so a value of 1.6 times 10 to the power of minus 19 joules. Elementary charge की wording भी सही है, actually रोहिल ने जो लिखा है. So that value in joules is said to be equivalent to 1 electron volt,
or in short 1 eV. Okay, now comes the second definition. तो जो prerequisites वाली definitions है ना, पहले मैं वो कराता जाऊं. Okay, so the second definition basically refers to energy of a photon. So electromagnetic radiations, EMR in short, are believed to be consisting of photons. A photon is defined as a packet of electromagnetic radiation or a quantum of electromagnetic radiation possessing a fixed amount of energy. So it is believed that electromagnetic radiations consist of these particles known as photons. And these photons are believed to be carrying a fixed amount of energy. Hence, a photon is defined as a packet of electromagnetic radiation possessing a fixed amount of energy. So this energy carried by these particles referred to as photons, this energy can be obtained using the equation E is equal to hf, where E is the energy of a photon, F is the frequency of the electromagnetic radiation, and h is a constant known as Planck's constant, whose value is 6.63 times 10 to the power of minus 34, and the units are Ks, joule seconds. So it is believed that electromagnetic radiations, once again, it is believed that electromagnetic radiations consist of these energy particles referred to as photons. So a photon is defined as a packet of electromagnetic radiation possessing a fixed amount of energy. So this energy carried by a photon can be obtained using the relationship E is equal to hf. So E in this case is the energy of a photon. F refers to the frequency of the electromagnetic radiation, and h, a constant known as Planck's constant, whose value is 6.63 times 10 to the power of minus 34. This constant value is given in the exams, so ये learn करने की जरूरत नहीं है. So based on the equation, I'm sure you would agree what this equation is implying is the higher the frequency, the greater is going to be the energy of the photon. Okay, so in simple terms, a photon belonging to violet light will have a greater energy content as compared to a photon belonging to, let's say, red light. Okay, so the higher the frequency, the greater is the energy of a photon. I'm sure you'd also appreciate कि अगर आप frequency के term को remove करना चाहो, तो आप frequency की जगह, if you want, then the term frequency can actually be replaced as follows. ये आपकी choice है कि आपको you replace करना है या नहीं, but if the need be, then frequency can actually be replaced by the term c upon lambda, where c in this case refers to the speed of light, and lambda in this case refers to the wavelength of electromagnetic radiation. So either the equation E is equal to hf, or alternately the equation E is equal to h times c upon lambda. Both of these can be used to calculate the energy of a photon belonging to electromagnetic radiation of a certain frequency / wavelength. See? Now,
uh, based on this working, or based on this formula rather, if I were to ask you, क्या आपको suggest करना है how much is going to be the energy of a photon which belongs to, let's suppose, ultraviolet light, whose wavelength is given to us as, let's say, 300 nanometers. If you apply the formula, and I'll go with the second version. So with the Planck's constant available, speed of light also a known constant, and the wavelength for ultraviolet given in this case as 300 nanometers. अब वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना जो मैंने नीचे करी हुई है तो जूल्स में ये आंसर आ जाएगा. And although there is no harm in writing down the answer in joules, it's perfectly okay to write it down. But then do appreciate that unfortunately joules में every time you'll have to deal with 10 to the power of minus something something. तो ये बहुत ही tedious टास्क हो जाता है कि हर दफा जब आप joules में लिखते हो ना तो आपको 10 to the power of minus so and so लिखना पड़ता है. Which is where the idea of studying electron volt shines. So long as 1 EV is equal to this amount. तो अगर आप convert करके आंसर लिखोगे तो I think the answer kind of becomes much more presentable. So there is no such thing as कि दोनों में से कौन सा आंसर अच्छा है कौन सा बुरा है. They are both equivalent. It's just that कि joules के अंदर we always have to deal with the idea of 10 to the power of minus something something each time around. बार बार लिखना पड़ता है. So a more convenient way is expressing the value of energy in the alternate units of electron volt, because that just makes the answer more presentable to look at. तो कोट करना आसान हो जाता है, वैल्यू को प्रेजेंट करना कन्वीनियंट हो जाता है. And that's probably the only advantage. Now, तीसरी चीज अब डिस्कस करते हैं. So now finally, the idea behind what is referred to as Einstein's equation of photoelectric emission. So this idea was explored by Albert Einstein. And before I move on to this concept of photoelectric emission, remember, तुम लोगों में से काफी लोगों ने, just as a side note, फिर मैं इसको erase कर दूंगा, तुम लोगों में से काफी लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर ये एक टर्म किया था, होपफुली आपको याद भी होगा. It was referred to by the terminology therm ionic emission. CRO के अंदर पढ़ते थे. And so far as the definition goes, इसका मतलब होता था emission of electrons from the surface of a metal by supplying thermal referring to heat energy. So this was a known concept for the scientists that we can cause electrons to be emitted from a metal surface by supplying the metal with some amount of heat energy. So based on this idea, Einstein established the fact कि यार अगर हम हीट की हेल्प से मेटल के सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं, तो फोटो कमिंग फ्रॉम द वर्ड लाइट, hence photoelectric emission referring to the idea that emission of electrons can take place even when the surface of the metal is exposed in front of light energy, or in short, electromagnetic radiation. So Einstein basically came up with this concept of photoelectric emission on the basis of thermionic emission. So since in thermionic emission it was a known fact कि हम मेटल के सरफेस को हीट करके उससे इलेक्ट्रॉन्स की emission करवा सकते हैं, आइंस्टाइन वाज ऑफ द ओपिनियन कि अगर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को emit करवा सकते हैं तो why not light?
and hence the term photoelectric emission, which refers to the emission of electrons when the surface of a metal is exposed to either you can say light energy or in short, electromagnetic radiation. Now the idea presented by Einstein was as follows. So what he suggested was, एक second, huh? All right. So what he suggested was, and this is a very layman kind of a diagram, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं. So this is what his suggestion was. He stated कि यार अगर आप मेटल को लाइट के सामने एक्सपोज करोगे, तो imagine a metal is exposed in front of electromagnetic radiations. Just a diagrammatic representation, nothing beyond that. So he was of the opinion that the energy of the photon belonging to the electromagnetic radiation, that is E is equal to HF. This energy of the incoming photon is going to be used up by the metal to serve two purposes. The first thing which he suggested was some of the energy of the incoming photon is going to be used up by the metal to bring its electron to the surface, while the remaining energy will be converted into the kinetic energy of the electrons so that the electrons can be emitted from the surface of the metal. Okay, so he concluded that the energy of the incoming photon, E is equal to HF, is actually going to be used up by the metal to serve two purposes. One portion of that energy, which he later on referred to by a special name known as the work function energy. So this portion, known as the work function energy, according to Einstein, was the energy utilized by the metal to bring its electron to the surface of the metal. Whereas the remaining portion, he suggested, is going to be converted into the kinetic energy of the electrons so that they can be emitted from the surface. So, अगर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए जैसे मैंने वर्डिंग्स लिखी हैं. मैं ये वर्डिंग्स को अप्रोप्रिएट फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है, तो अभी प्रॉपर फॉर्म में इसको रीड भी कर दूंगा. अगर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो यू शुड गो विद दिस वर्डिंग, और अगर आपको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना हो then you should write it down as follows. HF, the energy of the incoming photon, is used up by the metal to serve two purposes. One portion, which is known as the work function energy, जिसको मैं phi के symbol से denote कर रहा हूं, is the energy required by the metal to bring its electrons to the surface, while the other portion gets converted into the kinetic energy of the emitted electrons. So HF is equal to phi plus KE. That turns out to be the mathematical representation for photoelectric emission. तो वर्डिंग्स में लिखना हो तो यूज द टॉप वाला स्टेटमेंट. इसको एज ए सेड मैंने अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखा हुआ है. आई जस्ट शो दैट टू यू इन अ व्हाइल. तो वर्डिंग में लिखना हो तो इस तरीके से लर्न कर लीजिएगा, और अगर मैथमेटिकल फॉर्म सूट करती है जो ज्यादा कन्वीनियंट है, then go with this equation. Now he further suggested that the work function energy phi is given by the formula phi is equal to hf naught, where f naught, according to him, was defined as the threshold frequency. So what is threshold frequency? It is defined as the minimum frequency required to bring the electrons to the surface. So in case अगर आपको definitions को learn करना troublesome लगे ना, तो मैंने ये proper definitions नीचे लिखी हुई हैं, but nonetheless I think इस तरह से learn करना simple है कि if I ask you define work function energy,
So work function energy denoted by the symbol of phi is defined as that portion of the energy of a photon which is used up by the metal to bring its electron to the surface. Okay? And if I ask you, what is threshold frequency? So phi is equal to h f naught. F naught refers to threshold frequency, which is defined as the minimum frequency needed to bring the electron to the surface of the metal. So let me repeat myself again. Work function kya hai? The minimum energy needed to bring the electron to the surface. Threshold frequency kya hai? The minimum frequency required to bring the electron to the surface. Okay, so no need to worry about the statements. ये आगे appropriate forms में लिखे हुए हैं. I'll just show them to you in a while. Repeat में दोबारा एक और दफा कर दूं कि अगर आप पूरी consolidation में देखो तो according to Einstein's equation of photoelectric emission, his suggestion was that the energy of the incoming photon will be used up by the metal to serve two purposes. One portion of that energy, known as the work function energy, is used up by the metal to bring its electron to the surface, while the other fraction gets converted into the kinetic energy of the electrons. So the first function, or the first fraction rather, the work function energy, is denoted by the symbol of phi, where phi is equal to h f naught. And in this case, f naught refers to the threshold frequency, that is the minimum frequency needed to bring the electron to the surface. Now, based on this equation, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और आपकी चॉइस है, अगर आप phi को रिप्लेस करते हो, then you can even write down this equation in a slightly modified version. आपको कौन सी सूट करे वो फिर आपकी चॉइस है, दोनों एक्सेप्टेबल वर्जन्स हैं. नाउ इस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो हाउ डू वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन एनर्जी एंड हाउ डू वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी क्लियर आउट हो जाए. यू नो, जस्ट एज एन एग्जांपल, मैंने नीचे आपको एक सिचुएशन ये बना के दी है. So I'm just my interest now is before I move on to the statements, my interest now is कि just ताकि आपको समझ में आ जाए कि how can we apply the concept of photon energy is equal to hf and work function energy, that is phi. So मैंने ये किया है कि मैंने आपको तीन metals दे दिए हैं. So the first one is sodium. उसकी work function energy is given to you as 1.6 eV. So if you ask me, sir, what is this 1.6 eV telling us? So this value of 1.6 eV is telling us that sodium metal requires 1.6 electron volt of energy so that its electron can be brought to the surface. Likewise, for magnesium, the work function is given. And similarly, for calcium, the work function is also given. Okay, so these respective values are telling us how much energy is required by each of these metals to bring its electron to the surface. Now, let's suppose कि अगर मैं एक रेड लाइट लेता हूं, मैं उसकी वेवलेंथ अज्यूम कर लेता हूं 700 नैनोमीटर्स, और मैं ये करता हूं कि मैं तीनों मेटल्स को वन बाय वन रेड लाइट के सामने एक्सपोज करता हूं. And if my question is which combination will allow photoelectric emission to occur? So based on the theory studied so far, मुझे पहला स्टेप करना चाहिए. I should start with the formula E is equal to hc upon lambda so that I can work out the energy of the photon belonging to red light. So if I apply the numbers,
So the answer which I'm getting refers to the energy of a photon belonging to red light, whose wavelength is 700 nanometers. So in joules, I believe this answer is coming out to be 2.88 times 10 to the power of minus 19, which if converted, I believe turns out to be 1.77 EV. So basically, this answer is telling me that a photon belonging to red light, whose wavelength is 700 nanometers, uska energy ka content is coming out to be 1.77 EV. Up to recognize, will this photon be able to cause any photoelectric emission or not? I'm sure. Certainly not with calcium. Why not with calcium? Because the work function is quite high and the incoming photon is coming in with a pretty low energy. So it will not be able to overcome the work function as far as calcium is concerned. So calcium से emission तो नहीं हो सकती. Let's move on to the next one. Even magnesium से chance नहीं बनता. Because once again, the work function energy, the demand is much higher and the incoming photon comes in with a far lesser amount. So इसके साथ भी काम नहीं बन रहा. But yes, surely with sodium. So इस scenario के अंदर, I think it's pretty obvious कि मेरा conclusion ये बन रहा है. अच्छा, मैं सारे फालतू एरोज वगैरह मिटा दूं. मेरा conclusion ये बन रहा है. So with red light, photoelectric emission can only take place with the sodium. अच्छा, पहले मैं दो लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे दूं. हाँ, you can say that each electron has a fundamental frequency. Yes, Rohil. और ऊपर रोहिल ने लिखा था, was it tungsten? Yes, the experiment that Einstein did in his days. So उसने टंगस्टन को यूज किया था as the metal filament, जो CRO में यूज होता था बिल्कुल. Anyways, so with red light, the conclusion is photoelectric emission can take place at least with sodium. अच्छा, before I proceed, यहाँ पर एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं. एंड प्रोबेबली उनको द क्वेश्चन डज मेक सेंस. उनको ये लगता है, यार इसका मतलब है हम घर में से एक सोडियम का मेटल लेंगे, ये आपका सोडियम मेटल हो गया. लिटरली उनको ये लग रहा होता है कि हम एक सोडियम का मेटल लेंगे, रेड लाइट फॉरन से मिल जाती है, लेजर लाइट रेड कलर की होती है ना, कहते हैं सर रेड लाइट मारेंगे इस पे, और फिर वो कहते हैं सर कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होते हुए हमें तो फिजिकली नजर नहीं आ रहे. तो भाई डू रिकॉग्नाइज कि जो ऊपर मैंने बेतुका सा डायग्राम बनाया था, दैट डायग्राम वाज जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पस. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को देखने का शौक है तो आपका शौक पूरा बिल्कुल हो सकता है, बट सर्टेनली नॉट using the technique which I drew a while back. So that was just a diagrammatic representation, nothing more than that. इसको मैं circle कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके सामने वो mustard color से circle हुआ है. This is not how we do the experiment. अच्छा, the next question that they ask us is कि सर फिर कैसे करेंगे experiment? है ना? तो basically before I proceed, आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको दुकान पे जाके किसी भी शॉप पे जाके एक चीज परचेज करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है फोटो सेल. So that photo cell uh, kind of looks like, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये कमर्शियली मिलते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स आपको बना के देते हैं. तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को ऑब्जर्व करना हो, आपको शौक पूरा करने के लिए यू नीड टू परचेज दिस फोटो सेल. बेसिकली ये ग्लास की एक ट्यूब होती है.
इसकी एक साइड पर आपका वो मेटल होगा जिसको आप एक्सपोज करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस द मेटल इज गोइंग टू बी सोडियम। नाम लिखना कोई सेंसिबल नहीं है इतना। यूजुअली द मेटल इज जस्ट referred to either by the term metal filament, a generalized term, or it is simply referred to by the term cathode. ठीक है, so in my case for example sodium मैंने लिख दिया है, but a generalized terminology is a metal filament or a cathode. The reason why it is referred to as a cathode is because कि हम इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, hence we call it as a cathode. तो ये आपके मैन्युफैक्चरर ने मेटल को एक साइड पे लगा के रखा हुआ होता है। इस मेटल पर आप अपनी लाइट को एक्सपोज करोगे। ठीक है, सो द सो कॉल्ड रेड लाइट आप इस मेटल पे स्ट्राइक करोगे। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर जो मैं ब्लू कलर से बना के दे रहा हूं, दिस इज referred to as a collector, and as the name implies इसका कोई पर्पस नहीं है अदर देन कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो ये आपके उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। इसकी कलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। Connecting the collector to the positive terminal does make sense because electrons are negatively charged. So if they are produced, the positive potential of the collector will accelerate the electrons towards itself. तो फायदा ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर स्कैटर नहीं हो जाएंगे, बल्कि rather all of these electrons will have a tendency to approach the collectors. They'll all kind of accelerate towards the collector. ना फिर collector पे पहुंचने के बाद then they'll flow into the circuit. Now surely we can't see electrons with naked eye. However, if we place an ammeter in the circuit or a milliammeter in the circuit, then most definitely अगर photoelectric emission होगी, अगर होगी, तो current is going to be recorded. So this is how practical demonstration can be done. ठीक है, so photocell is the name of the component. ये आपको कमर्शियली मिल जाते हैं, अब तो खैर काफी चीप हो गए। तो आप लाइट को एक्सपोज करते हैं on the metal filament referred to as the cathode. If emission occurs, then the electrons are going to accelerate towards the collector, which is connected to the positive terminal. And once these electrons will begin to flow in the circuit, a current is going to be recorded by the ammeter. So technically, this is how photoelectric emission is demonstrated. Anyways, this is how photoelectric emission is demonstrated. अच्छा, मुझे एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स बता दी चीज। मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन में फर्दर ये चीज पूछनी थी। सो गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं एक्चुअली पूछना ये चाह रहा था कि व्हाट इफ पहले हमने रेड लाइट को यूज किया था, तो व्हाट इफ कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करूं, but this time the red light is let's say replaced by a violet light, whose wavelength is given as 350 nanometers. And if I ask you the same question, which combination
will allow photoelectric emission to occur in case of violet light. तो प्लीज यार वायलेट के लिए पूरी वर्किंग करने मत बैठ जाना. मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि वायलेट के लिए लिख देता हूं फॉर वायलेट लाइट. डोंट गो थ्रू द एंटायर वर्किंग वंस अगेन. जस्ट रिकॉग्नाइज दैट फॉर वायलेट लाइट मैंने वेवलेंथ को नोट करो हाफ कर दिया है फ्रॉम 700. इट इज नाउ 350. आधी कर दी है. एक्चुअली मेरे पास जगह जरा कम थी ना, तो मैंने इसीलिए उसको हाफ कर दिया. तो आई थिंक इफ द वेवलेंथ इज हाफ्ड, then based on the formula E is equal to hc upon lambda, you would agree photon energy डबल हो जाएगी. सो कैलकुलेट मत करना, डायरेक्टली कोट कर देना. डबल का मतलब है यार 1.77 का जरा डबल करो प्लीज. या 3.54 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इतनी हो जाएगी आई गेस. उमर एक सेकेंड, आपको अभी आंसर दे देता हूँ. उमर वैसे एवरीवन पे लिख दो यार क्वेश्चन को. अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, इतने सालों में किसी ने पूछा नहीं है, तो मैं थोड़ा चिल करूं तुम्हारे साथ. एवरीवन पे लिखो. हाँ, तो यार वो उमर ने लिखा हुआ है व्हाट इफ यू प्लेस एन एमीटर इनसाइड द फोटोसेल बिटवीन द सोडियम एंड द कलेक्टर. यार अंदर तो वैक्यूम है, तो सिर्फ एमीटर को ऐसे रखने से तो कुछ नहीं होगा ना यार. एमीटर को तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होते हैं. तो अगर मैं सिर्फ अंदर एमीटर को रख दूंगा इनसाइड द वैक्यूम, सो ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, उसमें एमीटर रखने का कोई फायदा नहीं होगा ना. एमीटर नीड्स टू बी कनेक्टेड यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स ना, तो सिर्फ अंदर रखने का तो कोई फायदा नहीं होगा ना बेटा. ठीक है उमर भाई, तो मैं कंटिन्यू कर लूँ. तो जहाँ तुमने सजेस्ट किया था वहां रखने का तो फायदा नहीं होगा. एक्चुअली ट्यूब इतनी छोटी होती है कि शायद इसमें एमीटर फिट भी ना है. दिस ट्यूब इज जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स वाइड, सो एमीटर तो रियलिस्टिकली इसके अंदर आने की जगह भी नहीं होती. सही. अच्छा एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द वर्किंग, मैं पूछ ये रहा था कि वायलेट के साथ क्या लगता है क्या होना चाहिए. एनर्जी डबल हो गई है, तो जरा प्लीज सारे मेटल्स के साथ चेक करो. तो दिस टाइम अराउंड आई थिंक ज्यादा अच्छा चांस बन रहा है. चेक करो 3.54. The photon energy is reasonably high now. So yes, this time around you can expect कि शायद सोडियम के साथ तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो जाएगा. मैग्नीशियम के साथ पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा. और कैल्शियम के साथ पहले भी नहीं हो रहा था, अ, अब भी नहीं होगा. है ना. So with regards to violet, so I think मेरा ये आंसर violet के लिए आपको reasonable sound करेगा. Um, with violet light, comma, emission occurs with सोडियम के साथ भी हो रहा था, और और किसके साथ हो रहा था, मैग्नीशियम के साथ भी हो रहा था, बट नॉट विद कैल्शियम. इन शॉर्ट, काफी स्टूडेंट्स इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं, एंड आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट. मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है. दिस इज हाउ आई गेस यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट. तो अगर आप कंक्लूजन तक रीड कर लो ना, तो फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा. आई गेस ऐसे लर्न करना सेंसिबल है कि ओनली सर्टेन मेटल्स, सर्टेन का सी मैंने गलती से इरेज कर दिया. ओनली सर्टेन मेटल्स
when exposed to certain electromagnetic radiations can cause photoelectric emission to occur. Okay, so the principle will not happen with every metal exposed in front of any light, but rather only certain combinations of metals when exposed to certain electromagnetic radiations can cause photoelectric emission to take place. ठीक है गाइस, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिसाइसली यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, एक पिंक लाइन बना देता हूँ तो मुझे याद रह जाएगा कि दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव स्टॉप्ड. नेक्स्ट वाली क्लास में आई विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम दिस पॉइंट. अच्छा यार, सिंस द अदर क्लास इज वेटिंग ना, मैं जरा रात को जब 9:30 तक ओवर हो जाऊंगा ना, तो फिर उस वक्त मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा. सो गिव मी अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर आई फाइनली अपलोड दिस लेक्चर. ठीक है, तो वंस आई एम डन विद ऑल माय क्लासेस ना, तब मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा. आई हैव जस्ट मेड अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द पिंक मार्कर हाईलाइटिंग द फैक्ट कि मैंने किस पॉइंट पे स्टॉप किया है. ठीक है गाइस, यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ. थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज अंटिल द नेक्स्ट क्लास.